सियासी सहयोगियों के सम्मान की मिसाल है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। सहयोगियों को लेकर के सरकार हमने चलाई। ये तो उनका चुनावी पैतरा है। आज जो मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाना चाह रहे हैं सिर्फ इस निगाह से कि किसी तरह जो वोट उनसे छिटक रहा है वो वापस लौटे। मैं तो लगातार कई वर्षों से इसी राह पे चल रहा हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं इस रास्ते से भटकने। You're watching News Epicenter with me, Maria Shakil. There is never a dull moment in UP politics, and yesterday Amit Shah threw a googly with his reach out to Jayant Chaudhary. With less than 2 weeks to go for the first phase of UP polls, the fight for Western Uttar Pradesh is heating up, and on the target of all political parties are crucial Jat votes that form 18% of the electorate here. Yesterday, Home Minister Amit Shah held a meeting with Jat leaders at West Delhi MP Parvesh Verma's house, which was attended by Muzaffarnagar strongman Sanjeev Balyan and leaders from the Jat community. This move was seen in political circles as a bid to placate the Jats who were miffed with the centre over a year-long farmers' protest. In that all-important meeting to woo Jat voters, Amit Shah told the Jat leaders that centre was always there for them, even if they had issues with certain aspects of the state government. That they understood their concerns regarding reservation, and then came the most critical statement which set the cat among the pigeons. Home Minister Shah said Jayant Chaudhary was the right man but in the wrong alliance, and that his doors are always open for the RLD chief. But the RLD clearly wasn't impressed with that offer, and in an exclusive conversation with me this morning, Jayant Chaudhary bluntly declined the offer, calling it an election tactic. The Western UP is a strong focus for the BJP as it had swept this belt, winning a whopping 53 of 58 seats in 2017 assembly polls. Riding on the perceived Jat Muslim unity after the farmers' agitation, the SP-RLD alliance is aiming to make gains in this region, which has been clearly now the BJP stronghold since 2014 Lok Sabha polls. The SP has left 33 seats for the RLD in the first round, out of which on 5 seats, Samajwadi Party candidates are contesting on RLD's hand pump symbol. While the alliance has picked 10 Jat candidates, the BJP has opted for 12. 11 Muslim candidates are also in the fray from the SP-RLD alliance. On News Epicenter this evening, I ask, can the Jat outreach help BJP retain its 2017 tally in Western UP, or is it advantage SP-RLD alliance here? I will take that question to the panelists in just a bit. But before that, let's listen in to what Jayant Chaudhary told me earlier today. अमित शाह जी के बयान के बाद आपने फौरन ट्वीट किया ये कहते हुए, न्योता मुझे नहीं उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। तो क्या ये माना जाए कि कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि न्योता चुनाव के पहले चुनाव चरण से पहले आया है? रास्ता क्या होगा, ये तो उनका चुनावी पैतरा है। वो गृह मंत्री सबके हैं, लेकिन हर चुनाव के पहले ये बताया जाता है कि उन्होंने खास बातचीत करी है, बैठक बुलाई है जाट नेताओं के साथ, जाटों के साथ। तो बड़ा अटपटा लगता है, अजीब लगता है कि एक राष्ट्रवादी पार्टी जातिगत आधार पे बैठक बुला रही है और उनको लुभाने की कोशिश कर रही है। सच्चाई ये है, जाट कम्युनिटी लार्जली एग्रेरियन है, किसान है, और उनकी भावना देश भर के किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह का आंदोलन हुआ, जिस तरह से उस आंदोलन को, उस आवाज़ को कुचलने और दबाने की कोशिश हुई, ये सारे जो लोग कल बैठक में मौजूद थे, ये सब उस समय क्यों शांत थे? आज जो मेरे प्रति सहानुभूति दर्शाना चाह रहे हैं सिर्फ इस निगाह से कि किसी तरह जो वोट उनसे छिटक रहा है वो वापस लौटे, वे लोग क्यों चुप थे? लेकिन हर चुनाव से पहले हमने ये नैरेटिव सुना है कि जाट भाजपा से नाराज है,
2017 में भी सुना था हमने और 2019 में भी सुना था, और 2019 का जो परसेंटेज है जाट कम्युनिटी का जो भाजपा को समर्थन मिला है वो 2014 के चुनाव से ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि अगर होम मिनिस्टर इस तरह से रीच आउट करते हैं, और उन्होंने ये भी इंडिकेशन दिया कि शायद पिछले कुछ महीनों में आपसे बातचीत भी हुई होगी या कुछ समर्थन की कोशिश भी की गई होगी, क्योंकि आप सही व्यक्ति हैं गलत साइड में, तो क्या माना जाए, कब बातचीत हुई है पहले? पहले तो ये कि जो आकलन ही होता है ना कि 2014 के चुनाव में जाट इतना परसेंट मिला उतना मिला, इस तो पता लग ही नहीं सकता। आई डोंट नो किस आधार से ये आंकड़ा फेंका जाता है कि 2019 के चुनाव में ज़्यादा जाट मिला, 2014 के पहले कब मिला। वोट तो खुलती नहीं है कभी, तो ये कुछ सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं हैं, कुछ कंपनियां हैं जो हमारी तो हैं नहीं, सब उन्हीं का पक्ष रखती आई हैं। तो पहले तो मैं ये आंकड़ा ही रिजेक्ट कर देता हूँ। सेकंड, अगर आप देखेंगे आज जिस तरह की ज़मीन पर एक भावना है, हमने लगातार संघर्ष किया है, ऐसा नहीं माहौल इस तरह से एक रात में नहीं बना है। जब 2017 में बीजेपी आई थी उनके पक्ष में कई फैक्टर थे, कई चीज़ें थीं जो उनके पक्ष में काम कर रही थी, और आज कोई सिर्फ जाट ही नाराज़ नहीं है, युवा नाराज़ हैं, महिलाएं नाराज़ हैं, किसान जो हर जाति से आते हैं सब नाराज़ हैं। तो कास्ट डिवाइड से ऊपर उठ के भी आप देखेंगे आज बीजेपी की हालत खस्ता है और किसी तरह से उसको साधने में ये लोग जुटे हैं। इससे ज़्यादा इनका भी कोई दिलीय लगाव हम लोगों से नहीं है। लेकिन पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पोस्ट पोल सिनेरियो में भी साथ होते हैं, वो हुआ है, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। और चौधरी साहब जो आपके पिताजी थे वो तो वाजपेयी के कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे, तो ऐसा नहीं है कि इक्वेशन नहीं बना है पहले। अभी फिलहाल कोई हमारी बातचीत नहीं है। जो ये एक संशय हमारे बारे में हमेशा रखा जाता है, मीडिया में चर्चा कराई जाती है कि ये यहाँ जा सकते हैं, ये वहाँ जा सकते हैं। मैं तो लगातार कई वर्षों से इसी राह पे चल रहा हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है इस रास्ते से भटकने का। तो आप कंप्लीटली रूल आउट करते हैं एक पॉसिबिलिटी के पोस्ट पोल सिनेरियो में आप भाजपा के साथ आ सकते हैं? 2 मिनट में मैंने ट्वीट किया है। पहले तो उन किसान परिवारों के साथ न्याय हो, जो किसान संगठनों के साथ सरकार ने वादा किया जिससे आज सरकार मुकरती नजर आ रही है, उन वादों को पूरा करे। और तीसरी चीज जो उनके लिए असंभव है कि पोलराइजेशन की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को वो त्याग दें। अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी कोई मुझ जैसा अच्छा नागरिक जो देश का भला चाहता है सोच भी सकता है। तो आप कोई कंडीशन रख रहे हैं कि पोस्ट पोल सिनेरियो में ये हो सकता है? इनके लिए असंभव है करना, तो दैट रूल्स आउट एनी पॉसिबिलिटी। ओके, नाउ टेल मी, हाउ श्योर आर यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट यू रिप्रेजेंट, दैट इज द जाट कम्युनिटी? फैक्ट इज कि फार्म लॉज रिपील होने के बाद एक सेंटिमेंट बन रहा है कि ये जो एंगर था वो ब्लंट हो चुका है, और यही जो आप बार बार आप बोल रहे हैं कि आप सर्वेस को नहीं मानते हैं, डेटा को नहीं मानते हैं, वो ही डेटा बता रहा है कि यही कम्युनिटी 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है। नहीं, बहुत बड़ा मैंडेट मिला है मोदी जी को और यंग लोगों ने आगे बढ़कर वोट किया, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन ये कहना कि जाट कम्युनिटी ने दूसरे समाज से ज़्यादा कुछ उनका जुड़ाव बीजेपी से बना, ऐसा नहीं है। और जो हरियाणा में जिस तरह का आपने आंदोलन देखा और जिस तरह का एक क्रूड व्यवहार सरकार ने किया, जिस तरह बीजेपी के आज जो मुख्यमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया और आइसोलेट करने की कोशिश की जाट समाज को, अंकित करके उनको कहा कि गैर जाट मुख्यमंत्री बनेगा, इन बातों को भी जो जाट समाज है वो भूला नहीं है। और मैं साफ कह देता हूं कि मैं एक जाति की राजनीति नहीं करता, ना मैं विश्वास करता, ना इन बातों को कभी मैं राजनीतिक मंच पे रखता हूं। लेकिन मुझसे अक्सर ऐसे इंटरव्यूज पे ये सवाल पूछे जाते हैं तो आई एम फोर्स्ड टू रिस्पॉन्ड। जयंत, देयर आर रिपोर्ट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि जो आरएलडी के कैंडिडेट्स हैं, जो आपके अपने कैंडिडेट्स हैं, उनको समर्थन तो शायद मिल रहा है, लेकिन जो सपा के लोग आरएलडी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं उन पे शायद वोट ट्रांसफर नहीं होगा। ये हल्ला काट रहे हैं वो लोग जो बीजेपी में काम करते हैं या बीजेपी के पक्ष में जो लोग हैं, वही लोग इस तरह की चर्चा फैला रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। और सपा के लोग आरएलडी के सिंबल पे लड़ना, मुझे बताइए, जब पार्टी की सदस्यता कोई लेता है और पार्टी के टिकट पे कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो तो हमारे दल का हो गया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
चंदन चौहान हमारे पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में थे। इससे पहले वो राष्ट्रीय लोकदल के यूथ के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिता संजय चौहान मेरे साथ आरएलडी के एमपी रह चुके हैं, बिजनौर के वो प्रतिनिधि रहे थे लोकसभा में। तो ये कहना कि वो सपा के हैं, आज वो गठबंधन के हैं, गठबंधन का चेहरा है, गठबंधन ने उनको उतारा है चुनावी मैदान में और 403 सीट पे हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं। एक आरोप ये भी लग रहा है कि वेस्टर्न यूपी में जहां पर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, एक कंसोलिडेशन भी दिखता है चुनाव में, वहां पर आरएलडी ने और आपका जो गठबंधन है, आप लोगों ने मुसलमानों को इग्नोर किया है, ओवर किया है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल दूंगी मैं, 5 सीटें हैं, उसमें से एक पर भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है और शायद इसीलिए एमआईएम और बसपा की तरफ वो देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर जिला और शामली जिला दोनों एक ही जिला होते थे, शामली एक नया जिला बनाया। शामली में 3 सीट है, उसमें 2 मुस्लिम लड़ रहे हैं। मेरठ में 7 सीटें हैं, उसमें 7 में से शायद 4 मुसलमान कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको हम प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे, भागीदारी नहीं दे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं। ये तो हर सीट पे जो विनेबल कैंडिडेट है और क्या समीकरण हम लोग बना सकते हैं, उस पर विचार करके हमने फैसला लिया है। मेरा आखिरी सवाल वही होगा जिससे मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की, क्या कोई बातचीत हो सकती है फ्यूचर में, या आप बोलते हैं फ्यूचर का रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है? दिल के दरवाजे बंद हैं, कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसा आधार नहीं जिसको लेके बैठ के हम बात भी कर पाए। हमने, आप मेरी पृष्ठभूमि देखिए, किसान आंदोलन में पहले दिन से मैं उतरा था, हम लोगों ने सेवा करी, हमारे कार्यकर्ता वहाँ जुटे। जब जब कोई मतलब आपत्तिजनक कोई एक समय आया, व्यवहार हुआ सरकार का, सबसे पहले वहाँ हम लोगों के बीच पहुँचे, लखीमपुर, हाथरस, हमने लाठियाँ खाई हैं सरकार की। अब क्या चीज़ हमें मिल जाएगी कि हम पलट जाएंगे? संभव नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे न्योता मत दीजिए, उन किसानों की सोचिए। So Jayant Chaudhary here clearly ruling out possibility of any post-poll alliance. I appreciate your time. Thank you so much for joining us. Before I go, what is your number for 10th of March of your alliance? कितना नंबर देते हैं आप? विनिंग नंबर। What is the winning अब number? मेजॉरिटी 403 में मेजॉरिटी हमारी हो गई। Let me bring in my guests now. Anila Singh, BJP spokesperson; Ghanshyam Tiwari, SP spokesperson; Neerja Chaudhary, senior journalist. Ghanshyam Tiwari, how anxious is the Samajwadi Party after that reach out by Amit Shah to Jayant Chaudhary? Good evening, Maria, to you, the viewers, and the fellow co-panelists. I think the interview that you just showed clearly spells out that the anxiety is on the BJP side. For Amit Shah ji to say on the Republic Day that BJP has been fighting for 650 years. I only know Nadir Shah came in these 650 years. So maybe he has some connection with Nadir Shah and he is referring to that connection. As far as BJP is concerned, they've not been around for 50 years. Second, for him to hold a meeting at Parvesh Verma's house, who was cautioned and given a notice by Election Commission on hate speech 2 years back in Delhi elections, demonstrates that it's a tragedy in India that the Home Minister of India is conducting a meeting where the agenda is the failure of hate and propaganda of Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. The question here is about Western UP, and we have seen how the Jats of UP, that constituency that we keep talking about, has only stood with the BJP since 2014. Well, UP has not seen such lathi charge, Sarkar, in any time in recent history. The youth are being lathi charged for demanding jobs. Farmers were lathi charged for protesting against black laws. Jayant Chaudhary ji himself was lathi charged on 4th October 2020, and then later cases were made out on RLD workers for protesting against it. So people who are united against this lathi charge government are the agenda. Anila Singh, would you say that that statement of Amit Shah is a win-win statement either ways? It is a political statement because he understands well that this will ensure chatter in Western UP, which is needed at the moment. My Ram to everyone. And Maria, see, time will tell. Time will tell because Jayant Chaudhary has recently taken over the party, RLD, and because before that Chaudhary Ajit Singh ji was in command of the political party. Definitely he has to prove himself
whether he has done a right thing to go ahead with this alliance or not. See, the thing is, whether he had gone with some other alliance or with this Samajwadi Party or with some other political party, or he would have decided to contest all alone. But the thing is, going with Samajwadi Party proves one thing, that you are in an alliance with that political party which had never stood with Jat community. It is a history, and everybody knows that. Even if I talk about Jat reservation, this political party, they never wanted the Jats should But get Anila Singh, reservation, the because timing of this the reach others out, always thought the reach out is happening. for them. The reach out is Sorry? happening 14 days before the first ballot will be cast on 10th. If it was indeed No, a it is not a serious reach effort out. and not just a political statement, then efforts at alliance formation would have happened. See, I don't know why Pravesh Verma ji had said this thing, because it did not come out from Sanjeev Balyan ji's side. And secondly, it is not the reach out, it is simply a caution statement that you are into a wrong alliance. These are the people who had tortured Jats. How can you forget? Okay. Not only in 2013, whenever they have come into regime, they have done this thing. Okay. Neerja Chaudhary, a statement which will be clearly seen as a googly of this election. And then response from Jayant Chaudhary has also put 3 conditions. We have often seen, example is also Nitish Kumar, that the so-called party which does polarization becomes a nationalist party, places India first when they want to form an alliance. Look, clearly Amit Shah ji is creating confusion amongst the Jats as part of the election strategy, and saying that Jayant Chaudhary is the right man in the wrong party, something that used to be said frequently about Atal Bihari Vajpayee, but that apart. I think knowing Jayant Chaudhary, he's been pretty consistent on his anti-BJP line over the years. I remember even, when the conversations with his father, Ajit Singh ji was much more open to alliances. I think Jayant Chaudhary has been much more consistent about the political line that he should take. But Amit Shah is obviously following a strategy, and Jayant Chaudhary, by his response, first think of the 700 families of farmers who lost their loved ones in the farmers' agitation. He is reminding the farmers, do not forget what you suffered. But clearly, Maria, Western UP is about, as your figures put out, 18% Jat. It is 26 to 27% Muslim. If these two communities get together, which used to happen in Charan Singh's time, Jayant Chaudhary's grandfather's time, and it is a 3-way contest with Mayawati's Dalits being 25%, then clearly Samajwadi Party and RLD will have a very good, position to fight back. No doubt the Jats have gone with the BJP in 2014, 2017, 2019, but Jats today, after the farmers' agitation and the stand taken by the Bharatiya Kisan Union, which has a hold in certain parts of Hasn't that anger Western been UP, blunted because of the repeal of the farm laws? Look, very simple thing. That is the $1 million question. Is it akrosh that the farmers feel, or is it mere narazgi? Will they go by a sense that's of a thin line kisani, there. That's a thin line. or If will they, नाराजगी क्या दूर हो गई? क्या इस एजिटेशन वो कॉल ऑफ करने हुआ और उसके बाद रिपील होने के बाद क्या वो नाराजगी दूर हो गई? ये दैट इज द क्वेश्चन हियर. घनश्याम तिवारी. Well, the Amit Shah model, and I think if anything, he has taken away any kind of campaign strength that BJP candidates have in Western UP. Because now the BJP candidate is feeling cheated that Amit Shah is batting for RLD-SP alliance. That is the level of desperation. The Amit Shah model is that Virat Kohli should bat, but Jai Shah should be the captain. And people of Uttar Pradesh will reject that. We have able captains who represent the agenda of Uttar Pradesh, and that is what people want. Okay. Anila Singh, a quick response on the charge that this is, if anything, desperation. Because why will you welcome your political opponent rather than
attacking them. The common strategy is attack your political opponents. Here, Amit Shah is not doing so. See, my all good wishes to Jayant Chaudhary ji. He is a young, dynamic politician, and I really wish that he takes the right decisions because, Maria, I'll just tell you in 5 seconds. अभी नीरजा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जाट और मुस्लिम का अलायंस नेचुरल अलायंस है, पर मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगी 2004 में ये समाजवादी पार्टी के साथ थे, इन्होंने 3 सीटें जीती थी, 2009 में बीजेपी के साथ थी, 5 सीटें जीत कर आए थे, 2014 में ये कांग्रेस के साथ थे, 0, 2019 में एसपी बीएसपी अलायंस के साथ थे, 0। और अगर मैं विधानसभा चुनावों की बात कर लेती हूँ यहाँ पर, तो विधानसभा में 2002 में ये बीजेपी के साथ लड़े थे उत्तर प्रदेश में, 14 सीटें, 14 सीट्स आई थी, 2007 में अकेले 10, 2012 में कांग्रेस के साथ 9 और 2017 में अकेले 1. So whenever he has, yes. So this doesn't prove. So that, if anything, this is showing that perhaps Jayant Chaudhary's political instincts is not on the winning side. Ghanshyam? The instinct right now that is getting tested is that of BJP, because they are changing the goalpost. SP-RLD alliance is absolutely clear that the agenda of this election is set. The captains of this pitch are set. It is the Bharatiya Janata Party. At the last minute, they had to ship out their captain Adityanath, who's nowhere to be seen anymore. Ab ki baar Yogi Sarkar is a flop slogan, so they have to say fir se Bhajpa. And now they are also worried about who their alliance partners are. It is a comedy that BJP is seeking a post-poll alliance with a pre-poll partner of the winning alliance. So whether it's a comedy on Bharatiya Janata Party's candidates or a tragedy of Indian politics. A quick response from you, and then I'll give the final words to Neerja. I just want to tell Mr. Tiwari, do not get too happy. Jats in Western Uttar Pradesh, they know it very well whom they have to vote, and they have proved it earlier also, and they are going to prove this time as well. So all the best to Jayant Chaudhary ji. He has gone ahead in an alliance, and when he sealed this alliance, at that time only we came to know that Bharatiya Janata Party in Western Uttar Pradesh is going to win hands down. Okay. Neerja, for all of us who have covered politics and seen how the BJP functions, we always know that there is a great degree of secrecy as far as their, forging of alliances are concerned. Why would Mr. Shah make a statement of this nature, if it was not only and only understanding the ramifications of it and fully well having calculated it? Look, obviously to create confusion amongst the Jats. He is trying to give the impression that after the elections, the RLD will come with us. So might as well vote for us. Ultimately, the Jats in Western UP are divided today. No doubt about it. Earlier, they'd gone whole hog with the BJP. Now, a section is coming back to the SP-RLD alliance. To what extent, it depends to be seen. And ultimately, as I was saying, whether it's going to be the sense of Kisani, मैं किसान हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, that will prevail, or the Hindu identity which prevailed in occupational 14, identity 17, versus the larger religious sentiment. That's what you're saying, Neerja. That's right. And that will decide UP? Western UP? That will decide Western UP. That will decide Western UP. Appreciate your time always, Neerja Chaudhary, Ghanshyam Tiwari, Anila Singh. That, of course, we have been saying, it will be seen as a political master stroke, a statement which has led to multiple analysis in UP and of course outside as well. That's all from me. Thanks so much for watching.